In the heart of India, a journey of purpose begins. From the bustling city of Jammu, 17 riders embark on an epic rally driven by a mission to spread awareness, quality, and standards to the farthest corners of Jammu, Kashmir, and Ladakh. नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नॉर्दर्न रीजन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इस बार का जो प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर JNK ब्रांच ऑफिस जो है एक बाइक रैली निकाल रही है श्रीनगर से लेके कारगिल तक, ताकि जगह जगह रुक के हर जगह पे एक प्रोग्राम किए जाएंगे। लोगों को अवेयर किया जाएगा अबाउट BIS राइट्स, ISI मार्क, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड अगर उनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं तो कैसे उसको कर सकते हैं, रिडर्सल कर सकते हैं, उस सबके बारे में बताते हुए आगे जाएंगे। मेरा नाम तिलक राज है। मैं भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू कश्मीर ब्रांच का ब्रांच हेड हूँ। हम लोगों ने भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मुहिम चालू की है मानकों से सब लोगों को जोड़ना। मानक सबके लिए एक स्टैंडर्ड है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी के बारे में बताता है। इसके लिए हमने अब की बार चुना है श्रीनगर से लेके हम सियाचिन बेस कैंप तक मानकों की विविधताएं हम लोगों को बताना चाहेंगे। इसके लिए हमने पॉइंट रखे हैं अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, कारगिल और सियाचिन बेस कैंप। हम इन जगह जाके लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो मानकों से बनती हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा BIS हॉलमार्क, BIS ISI मार्क, BIS के रजिस्ट्रेशन मार्क, ये सब मानकों के बारे में लोगों को जागरूक कराने का हमारा मुहिम है। हम इस मुहिम के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हमारे 24 से 25 ऑफिसर पूरे भारत देश से यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। 22 बाइकें यहाँ से चालू करी जाएंगी और ये जगह जगह जाके लोगों को अपडेट करेंगे। On behalf of Bureau of Indian Standards, I congratulate the standardization fraternity on the occasion of World Standards Day. Standards play a vital role in enhancing safety, efficiency, and innovation across industries worldwide. They facilitate international trade, ensure product quality, and protect consumers. I take this opportunity to thank all the experts who are actively participating in international and national standardization efforts and making our lives easier, safer, and better. I am Anil Kapadi. I am director in BIS, and हम लोग यहाँ जमा हुए हैं श्रीनगर में। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। वी आर अ बंच ऑफ 16 राइडर्स हियर एंड विल बी स्टार्टिंग टुडे, विल बी hitting the roads and passing through Kargil, then Leh, Khardungla Pass, Nubra Valley. Will reach Siachen Base Camp. On 9th October 2024, Srinagar witnessed the next chapter of this journey. From the beautiful foreshore road, the rally set off once more, this time to reach deeper into the region. Their first stop, Anantnag. The district industries center hosted an event dedicated to the importance of BIS standards, hallmarking, and product registration. Here, the bikers became more than riders, they were educators. Through lectures and discussions, they engaged locals, spreading the message of quality and safety. After an impactful day, they returned to Srinagar, ready for the ambitious road ahead. The morning of 10th October began with a renewed sense of determination. As the bikers flagged off from Srinagar, their destination was Ladakh, the land of towering mountains and deep valleys. The first leg of the day took them to NIT Srinagar and Khyber cement plant, where the riders again spread awareness about BIS and quality standards. तब से खैबर बना है, तब से खैबर का नाम क्वालिटी की वजह से ही है। तो हम आज फिर से इनका एक और बार शुक्रिया करते हैं। इन्होंने हमें पूरी वादी में चूज किया कि हम इनके थ्रू अपना मैसेज आगे बढ़ाएं। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि देश में भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से that we learn
learn from you and you learn from us. Good morning all. Respected Director Sir, NIT Srinagar. My name is Tilak Raj. I am Director Bureau of Indian Standards. Also, we are also making standards for legged robots. So we are going forward in that. We have made standards for drones, agricultural drones, and more drone standards are also coming. But the real challenge awaited, the 150-kilometer stretch to the Kargil War Memorial. Ladakh's roads, though stunning, are relentless, with steep altitudes and twisting paths that test even the most seasoned riders. Before reaching Dras, they first had to conquer the treacherous Jojila Pass, the vital link between the Kashmir Valley and Ladakh. As the sun dipped behind the mountains, the riders finally reached Dras, one of the coldest inhabited places on earth. 11th October. With the sun rising over the snowy peaks, the rally continued towards Kargil, a place rich with history and natural beauty. The first stop, the Kargil War Memorial. Here, the bikers paused to honor the brave soldiers who fought for India's freedom. A program was held, not only to remember the fallen but to spread awareness about the importance of buying gold with a BIS hallmark, ensuring quality and authenticity. The bikers explored the War Museum, where relics and artifacts from India's military history were on display. It was a moment of reflection, a reminder of the sacrifices made for the nation. But the journey wasn't over yet. From the War Memorial, the riders made their way to Randhawa Top, at an altitude of over 13,000 feet. A place of strategic significance, Randhawa Top stood as a reminder of the region's turbulent history. By nightfall, the bikers were back on the road, making their way through the cold, winding mountain roads to Leh. It was a long, dark ride, battling the elements, but they persevered. The spirit of the rally was alive. इस समय लगभग 120 किलोमीटर कुछ बचे हैं लेह आने में. अभी आगे टेम्परेचर और फॉल होता जाएगा. जोश इज़ वेरी हाई और आप देख रहे हैं कि रात हो चुकी है और ठंड बहुत है यहाँ पे एंड वी मे फेस सब जीरो टेम्परेचर. 100 किलोमीटर और सफ़र तय करना है. टास्क बहुत चैलेंजिंग है. रात का समय है, ठंड हवाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे बाइकर्स की टीम का जोश हाई है. The morning of 12th October dawned, and the bikers were filled with excitement. Ahead of them lay Khardungla Pass, one of the highest motorable roads in the world. लेह से खारदुंगला की दूरी तकरीबन 34 किलोमीटर है और अभी हम 19 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और यहाँ से अब तकरीबन 15 किलोमीटर दूर खारदुंगला है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है. पहला सबसे बड़ा माइलस्टोन खरदुंगला पास 17,892 फीट हमने अचीव कर लिया है. हम लोग लेह से खारदुंगला पास पहुंचे हुए हैं. It was a challenge unlike any other, but it was one they were ready to face. Their journey then took them to Nubra Valley, a place of otherworldly beauty. मैं आज अपनी पूरी बियास टीम के साथ लेह से नुब्रा वैली के लिए निकला हूँ. After hours of riding through winding roads and dramatic landscapes, they arrived at their destination, where they would rest under the starlit skies. 13th October 2024. The final day of the rally had arrived. The destination? The legendary Siachen Base Camp, a place that every rider dreams of reaching. At Sunrise, the bikers began their journey through the rugged terrain, the anticipation building with every mile. As they rode through Ladakh's awe-inspiring landscapes, the realization of their accomplishment set in. Finally, after hours of riding, the bikers reached their ultimate goal, the Siachen Base Camp. Awaiting them was Mr. Tilak Raj, head of BISJKBO, who welcomed them with open arms. With songs of victory and celebrations, the bikers stood together,
knowing they had not only completed a thrilling adventure but had also spread an important message to the farthest corners of the region. The rally had reached its final flag-off, but its message of quality, standards, and safety would continue to echo long after the engines were turned off. Now finally we are at Siachen base camp. It has been a very exciting and adventurous journey. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ठंडा मौसम है and everyone is so excited and so elated कि यहाँ पे we are thinking कि this is something out of the world experience. BIS की टीम कड़ी मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद, 4 दिन के बाद सियाचिन बेस कैंप को टच किया है। इसके लिए मेरे सभी राइडरों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। And so, the journey came to an end, but the message echoed far beyond the mountains. Through every mile, from the valleys of Kashmir to the peaks of Ladakh, this rally wasn't just about the thrill of the ride. It was a mission to spread the importance of quality, safety, and standards. The bikers may have reached the final flag-off, but the spirit of BIS continues to guide every step toward a future built on trust and excellence.